करिकी आमे आजी रो जो अछि सॉल्व करिया। अच्छा द मेन पर्पस ए सब क्लास रो कोन कि तमन को देखिया चाहूछु कि जो तमे आमे एते प्रिपेयर होचे आ एते नर्वस हो जाउचे कि हमको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस गोडा आसुची। काले डिफिकल्ट क्वेश्चन आसीबो कि जदी एभळा क्वेश्चन आसीबो केमिति आंसर करबो, सेभळा क्वेश्चन आसीबो केमिति आंसर करबो। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन जोटा के एक्चुअली एसएससी आ बैंकिंग रे रहे सेटा केमिति आ से लेवल ऑफ क्वेश्चन ता केते सहज आमे केते की इजीली प्रिपेयर होई परिया से विषय बस सेति की जाने पई आमे एई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जोड़ा आमे डिस्कस करूछु। तो आज आमे डिस्कस करिवु एसएससी रो 2024 रो एसएससी रो जो क्वेश्चन पड़ितला और बैंकिंग भी 2024 रो किछि क्वेश्चंस आमे डिस्कस करिवु। विशेष किछि नाही आमे जस्ट वोकैबुलरी ऊपर आमे स्ट्रेस देबु। को वर्ड गोडा केमिति बसिबो माने माने को प्रकार क्वेश्चंस गोडा आसुची, क्वेश्चन पैटर्न कोन आ को प्रकार क्वेश्चन को केमिति अप्रोच करा जिवो, केमिति डिसाइड करबो कोटा पर्टिकुलर वर्ड। जदी कोडी कंफ्यूज होउछो, जदी तुम कंफ्यूज होउछो ताले केमिति डिसाइड करो कोटा करेक्ट डेफिनेशन माने कोटा ठीक आंसर होबो कोटा भूल आंसर होबो। है तो सेही गुटा को आज हमें टेस्ट करिवा ए क्लास रे। तो एठी गोटे अच्छा एठी मु एमिति करिनी कि गोटे प्रकार क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस होची, सेकंड आ गोटे प्रकार क्वेश्चन सेकंड पर डिस्कस एमिति नो। जो पैटर्न ने तमरो पडिथिला, जो पैटर्न ने तमरो प्रीवियस माने बैंकिंग की एसएससी रे एटा एसएससी रे पडिथिला, जो पैटर्न ने पडिथिला मु सेही पैटर्न ने ही तुमको आज डिस्कस करछ। किछि चेंज करने की जेंदे सिनोनिम एंटोनिम गोटे आडे रखि देली कि तापरे जो माने फिल इन द ब्लैंक्स अलग कर रखते ना, सेमिति किछि करनी। जो पैटर्न एसएससी रे आछि, जो पैटर्न ने बैंकिंग आछि, एग्जैक्ट सेही पैटर्न ने हमें डिस्कस करिवा हला। तो एटा एसएससी रो ए क्वेश्चन दा एसएससी रे पड़ितला हला प्रीवियस ईयर। तो से को जी सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम माने कोन सेम नेम। अच्छा सिनोनिम रो अर्थ होची सिमिलर, सिमिलर नेम माने सिमिलर मीनिंग थाई कि वर्ड थो सेम एग्जैक्टली होबने। हमें सेम हमको सिनोनिम माने सेम नेम हला, सेम नेम हो सिमिलर मीनिंग एग्जैक्टली सेम नुह, सिमिलर तारी भलिया। एंटोनिम कोन ऑपोजिट, सिनोनिम होची सिमिलर मीनिंग तला। तो केबे भी सिनोनिम जदी पचाछि तमे एग्जैक्ट मीनिंग खोजिया पे टाइम वेस्ट करबनी। सिमिलर मीनिंग जोटा कि कॉन्टेक्चुअली सिमिलर होतो सेटा भी हमें आंसर रखि परिया। देखो एठी हमरो अछि वर्ड ता अछि फैटल। फैटल अर्थ कोन डेडली, डेडली किंबा वी कैन से anything that leads to death। हमें कहि परिया फैटल वुंड, जदि मु कहू जे फैटल वुंड अछि माने वुंड माने कोन खंडिया। फैटल वुंड माने से खंडिया जोगु गोटे लोकर मृत्यु भी होई पारे। फैटल ब्लो माने गोटे एडी जोर तक बाडेला कि जोथि ता मृत्यु भी हेई गेला। तो सही मिलिया। तो फैटल रो अर्थ होची डेडली किंबा एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ। से कहूची कोटा होची यार सिनोनिम। एडिशनल माने समथिंग एडेड टू माने एक्स्ट्रा। एडिशनल माने कौन होची एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा और मोर। तो एटा डेफिनेटली नो। जोवियल माने होची हैप्पी। अच्छा इजी हमें जानी छे। अच्छा ऑलरेडी हमें डेडली हमें जानले फैटल अर्थ होची डेडली, हमें एठी आंसर होची डेडली। तो एठी होची हमर आंसर ता हम पाई गेले डेडली हला। तो सेकंड होची select the option that expresses the opposite meaning of the underlined word। यार opposite meaning देखो सेटा गोटे डायरेक्टली गोटे वर्ड देथिला, ए वर्ड ता से गोटे सेंटेंस रे यूज करिछि। जदि सेंटेंस रे यूज होछि से सेंटेंस रे जे वर्ड जहां मीनिंग बाहरियो तार हमकु ऑपोजिट खोजे रछि। तो सेंटेंस कोन कहउछि द एक्सप्लोसिव यूज्ड इज
the explosive used is of my own formulation and I can vouch for its efficiency. अच्छा, ये लोकटी कौन कहूँ जो एक्सप्लोसिव टा यूज होईची, से जो एक्सप्लोसिव टा यूज होईची is of my own formulation, माने मु सेटा को निजे फॉर्मूला बने की तैयारी करिछि and I can vouch for its efficiency, एवं मु तार एफिशिएंसी पाई वाउच कर परिबी. माने कोन एफिशिएंसी रे गोटे जदी लोक गोटे निजे तैयारी करिछि गोटे एक्सप्लोसिव माने बम धरे तैयारी करछि, जदी सेटा तैयारी करछि से तार एफिशिएंसी विषय कोन कहबो कि हां एटा हबो ही हबो, राइट. एटा माने मु ता पे गारंटी दे पाछु कि सेटा फाटिबो. तो वाउच रो अर्थ होची गिविंग गारंटी, माने गिविंग एश्योरेंस कि यस दिस विल वर्क. तो एटा होची गोटे इनवैलिडेट. इनवैलिडेट मींस मेकिंग नॉट ऑपरेशनल. invalid INVALID invalidate है ना, making not operational. certify guarantee, giving guarantee ना. maintain अर्थ कौन? maintain अर्थ होची to make or make to keep the quality or quantity of something same. सेमती करके मेंटेन करछु कोन से क्वालिटी कि मा क्वांटिटी को हम सेम करछु ताल भी सेटा मेंटेन करछु ले कहि परिया. विटनेस somebody who has seen something ହେଲା, the seer. तो एठी वाउच रे गिविंग गारंटी एटा होची मेकिंग नॉट ऑपरेशनल. एटा हबो तारो ऑपोजिट, कारण हम खोजर अछि ऑपोजिट मीनिंग. माने मु गारंटी दे परछि कि एटा हबो, माने मु इनवैलिडेट करछि, माने मु कहछि ना एटा हबोनी. ओके, सो इनवैलिडेट शुड बी द आंसर. नाउ थर्ड वन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. टॉक्सिक. ओके, टॉक्सिक होची अर्थ बैड फॉर हेल्थ. बैड तो कहबनी, आमे कहबा हार्मफुल फॉर हेल्थ सेटा हो. ये कुछ टॉक्सिक अर्थ कोन हार्मफुल फॉर हेल्थ, तार सिनोनिम ये करे अछि, तार सिनोनिम बाहर करे अछि. नाम बाकी कोन कोन अछि? lethal something that will kill some. Lethal means deadly. Lethal weapon जेकरा हम कहू lethal weapon ता माने कोन? It is a little bit deadly हैला. lanky रे होची अर्थ thin. अच्छा, elicit to bring out. अरे laudatory to applaud, to clap है ना. तो एठी कौन कहूची हार्मफुल इज हमें सिनोनिम खोजिबा. हार्मफुल फॉर हेल्थ, lethal is deadly. This should be the answer. ठीक अछि, सिंपल अछि, राइट. सो देखो से माने क्वेश्चन भी सेमि पकोनंदी कि गोटे माने सबुतक माने सिनोनिम की एंटोनिम एका संग दे देले. सिनोनिम पे अलग दोछनी, एंटोनिम पे अलग दोछनी. एंटोनिम पे देखो पैटर्न केमति अछि कि से माने गोटे सेंटेंस रे यूज करछंदी, से सेंटेंस रु जहा कॉन्टेक्स्ट से जहा मीनिंग दो तारा उल्टा से खोजिया कहउछन. तो नेक्स्ट टाइम देखिबा एटा कोची select the word which means the same as the group of words given. माने से कोची one word substitution. एटा होची one word substitution. Anything that means this, ए चारिटा ऑप्शन लु
এই চারটা অপশন এনিথিং দ্যাট মিন্স দিস ইয়ার অর্থ যেটা দ্যাট শুড বি দ आंसर है। अच्छा एभलिया क्वेश्चन को अप्रोच करिया पई इट इज ऑलवेज बेटर टू रिलाय ऑन योर नॉलेज। इट इज ऑलवेज बेटर टू रिलाय ऑन योर नॉलेज कारण आमे जेतो प्रिपेयर हो आमे बहुत प्रकार मटेरियल पढू आमे जो बहुत प्रकार मटेरियल पढू आमे वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो कि वोकैबुलरी हम पढू ता आमे यहां जानछु सेटा 9 माने सब बेले प्राय ठीक ही होता है यदि कंफ्यूजन है सेटा अलग किंतु जदि हमें एभलिया क्वेश्चन रे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम प्रैक्टिस करछे ता माने हमरो 99% चांस अछि कि हम सेटा ठीक हो कंफ्यूजन गोटे परसेंट नहीं थाई पारे। तो देखो जदि हम गोटे डेफिनेशन पढछु कि यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रेशियस स्टोन माने गोटे स्टोन गोटे पत्थर को मेजर करिया पे गोटे यूनिट। अच्छा गोटे पत्थर को माने मेजर करिया पे यूनिट कोन केजी ही परियोनी कारण पत्थर को हम केजी रे यूनिट करन पत्थर माने एटी कोन कहछ डायमंड रूबी। अच्छा डायमंड और रूबी को हम केमिति माने ये करू ओजन करू तांकर यूनिट ता कोन कैरेट। देखो या भीतर गोटे ऑप्शन दे कैरेट देखो कैरेट अच्छी बाकी पढ़ने दरकार पड़ला कि तुम देखि देला फटास के नहीं कि प्योर गोटे यूनिट नु हो एक्यूरेट गोटे यूनिट नु हो कि रिलायबल गोटे यूनिट हम जानि पाले कि अरे भाई स्टोन को मेजर करे गेले कोन दरकार कैरेट तो एटी गोटे कैरेट ऑप्शन है दैट नु सरला। सो हमको बेसी वी शुड ऑलवेज रिलाय ऑन आवर नॉलेज सेति पे किनु से नॉलेज ऊपर रिलाय करिया को हेले भी हमको सेते ही पढ़िया भी दरकार। ठीक अछि नेक्स्ट। अच्छा so go select the option that can be used as a one word substitute for the underlying group of words। एटा she is proficient in speaking many languages गोटे से झियोटी बहुत भलो करी अलगा अलगा लैंग्वेज कही पारुची। ऑलराइट लेट्स से गोटे होची हेटेरोलिंग्विस्ट bilingual multilingual and multilingual very good। अच्छा कहीं बाकी गुड़ा भी तो ही परियो हेटेरोलिंग्विस्ट माने कौन अलगा अलगा भाषा जे कहि परछ गोटे भाषा नो अलगा अलगा भाषा जे कहि पारे हमें ताको हेटेरोलिंग्विस्ट कहि पारे। बाइलिंगुअल माने जे जोड़े भाषा कहि पारे। मल्टीलिंगुअल माने जे बहुत अलगा अलगा माने बहुत बेसी भाषा कहि पारे ताको मल्टीलिंगुअल कहि पारे। मोनोलिथिक रो अर्थ कोन पुनी मोनोलिथिक होची गोटे जो गोटे स्टोन ने तयारी करा जाय था कोनोसी गोटे ऑब्जेक्ट माने गोटे स्टोन ने सेटा तयारी तो ताको हमें मोनोलिथिक को। तो ऑब्वियसली हेटेरोलिंग्विस्टिक हबनी मोनोलिथिक स्टोन संगे रिलेटेड बाइलिंगुअल जोड़े पाई से कहूची मेनी लैंग्वेजेस तो हमर आंसर आसीबो मल्टीलिंगुअल। ठीक अछि राइट। Okay next select the option that can be used as one word substitute for the underlying group of words। a person who likes to argue about anything माने सब बेले से कौन करथो जी सब बेले प्रत्येक विषय रे से माने आर्ग्यू करथो से को माने एमती सब लोक कली हुड़ा जे माने सब को थरे कली करिया पे रेडी थांदी हैं माने तमे गोटे कथा कहो ताकु से चैलेंज करो सब बेले हां ना एटा है ना तो लाइक दैट ठीक है। ऑलवेज अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट तांको भल लागे ये सब करिया। तो देखो कौन कौन ऑप्शन अछि वेराशियस माने जे बहुत कहे कि जोटा को वेरीफाई हे परिबो हला जोटा को वेरीफाई हे परिबो कि जो जे लोक बहुत कहे ताको हमें वेराशियस को वेराशियस होची जे बेसी जोटा को वेरीफाई हे परिबो। रेटिसेंट नो जे माने टिके रिजर्व कंटेंशुअस जे कंटेंट करियो माने तमे गोटे कहबो तमे एग्जिस्ट गोटे कहबो कंटेंशुअस आ कावर्ड डरपोक सेटा बिल्कुल नु तमर कोडा आसियो कंटेंशुअस राइट।
ठीक अच्छे। अच्छा नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा ये भी गोटे प्रकार अच्छी, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा कौन जी, ब्यूरोक्रेसी, एम्ब्रेस, कॉनोशर एंड रेलेवेंट। अच्छा ये देखो जनरली एथे पिला माने कॉनोशर, एम्ब्रेस, ब्यूरोक्रेसी जदि या भीतर जानी नथिबे से माने आगो ता पर फोकस करिवे। ए भलिया जगह रे सब बेले सेठी फोकस करियो जो वर्ड गुडा तुम जानिचो आगो चेक कर दो सेटा ठीक अछि ना नाही, ता पर जाई जो न जानिचो ताकू अटेम्प्ट करियो। देखिए जदि कोन वर्ड जानिचो तुम देखो तार स्पेलिंग ठीक अछि ता माने सेटा को एलिमिनेट कर देलो। लास्ट को जदि कोन से ऑप्शन रही गला तुम ताकू मार दे परियो, माने आंसर वाला चूज कर दे परियो। तो एथरु को गोटे वर्ड अछि जो तुम जानिचो, रेलेवेंट गोटे वर्ड तो जानथो ना, रेलेवेंट। अच्छा ए देखो RELEVENT रेलिवेंट हैला, तमे वर्ड तो जानछो, तमे एटा कोन रेलेवेंट तो ठीक है मु जानि इजी रा देखले अन्य कोड डिफिकल्ट अछि। नो दैट इज नॉट द बेस्ट अप्रोच। द बेस्ट अप्रोच तमे जानिछो गोटे वर्ड आगो ताकू चेक करो। ओके देखले एठी भूल अछि, सो दिस शुड बी द आंसर। बाकी और कोन सिडा चेक करिया दरकार पड़िला नै। नाउ select the most appropriate synonym to replace the underlined word in the given sentence। ए जो altruistic ए word जोटा अछि, no altruistic act is truly sincere, एटा गोटे philosophical thought, गोटे philosophical thought जो थरे से कहूची जदी माने no altruistic act is truly sincere माने गोटे लोक जी की समस्त को भल पाई काम कर, माने अल्ट्रुइस्ट इज अ पर्सन जे सब संसार त्याग कर दे, जे लोक माने पे सब ये करे। नो सको नो अल्ट्रुइस्टिक सेल्फलेस एक्ट, नो सेल्फलेस एक्ट इज ट्रूली सिंसियर। जदि तमे गोटे कहूचो कि गोटे लोक सेल्फलेस है कि गोटे काम करची, से कहूचे ना जदि तुम भाबु जे सेल्फलेस एक्ट है तो सेटा सिंसियरली ही न तो किछ ना किछ छोड़ गड़बड़ थिबो। तो सही हिसाब रे सेल्फलेस एंड अल्ट्रुइस्टिक ता संगे कोन कोन हे पर फेनोमेनल, फोनोटिपिकल, फिलैंथ्रोपिक एंड फैंटास्मल। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तमे फैंटास्मल, फोनोटिपिकल एगुडा सब देखि कंफ्यूज हबो। फेनोमिनल तुम जानिचो, मुझे हाँ कहली जो वर्ड गुड़ा जानिचो आगे तापर फोकस करो। फेनोमिनल, फेनोमिनल आउ अल्ट्रुइस्टिक से सेम हबो कि? अल्ट्रुइस्टिक रो अर्थ फेनोमिनल हेई परिबो कि? सेल्फलेस और फेनोमिनल सेम मीनिंग? नो। फोनोटिपिकल जानिनो, फैंटासिमल तमे जानिनो, लके छाड़ दियो। एटा कोन अछि? फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक रो अर्थ कोन? पर्सन हु एक्ट्स फॉर द betterment of people, person who does for the betterment of society or people, से होची philanthropic। ये कौन होची? No altruistic act is truly sincere, no selfless act is truly sincere। जो माने philanthropic थांती से माने भी लोगों पर ही काम करती, they don't look at their own benefits, अन्य पर ही करती। Same thing, altruistic is equal to philanthropic। तो हमारा आंसर 8 ही अच्छी। ओके तो मे बी जिते तुम एसएससी बैंकिंग एग्जाम दो तुम भाभी के मुंडर जाओ कि भाई केड़े डिफिकल्ट वर्ड आसीबो ना, आगो चेक करो जो वर्ड को तुम ऑलरेडी जानछो, मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर सही ही थिबो हैला, लेकिन पेपर भी से भले हवार पड़े अच्छी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इनुएंडो। अच्छा इनुएंडो, इनुएंडो माने दोषारोप करिबा। ओके सो क्रूड माने नॉट प्रॉपर्ली मेड, प्रोज माने कोन ना सेटा PROES प्रोज। एटा होची जो
स्टोरी आउ कविता आउ माने गप दैट इज प्रोज। अच्छा रैग्ड माने भंगारुजा किंबा चिरा फटा। इंसिनुएशन एठी तमे इंसिनुएशन अर्थ जानि न। अच्छा सिंपल देखो सिनोनिम कोची इन्युएंडो तमे इन्युएंडो अर्थ जानलो दोसारोप करिया। क्रूड तो हबनी, प्रोज हबनी, रैग्ड हबनी। चारिटा ऑप्शन अछि जो तीनटा ऑप्शन हबनी ताले कोई ऑप्शन टा हबो आंसर से गॉट इट। अच्छा next select the most appropriate option to fill in the blank. A blank Vinod had a dash escape in the car accident sorry Vinod had a dash escape in the car accident. अच्छा ये जो एटा हमरो इडियम्स एंड फ्रेजेस भीतर थाए फ्रेजल वर्ब किबा इडियम्स एंड फ्रेजेस सेही भड़ा जिनिस थाए। तो विनोद हैड अ डैश एस्केप इन द एक्सीडेंट ऑप्शन गुड़ा न देखि कि तमे कोन जानि बच्चे कि विनोद को अल्प के बंची गला ओडिया रे कोन कहजो विनोद अल्प के बंची गला एही हेतिबो। कंफर्टेबल तो न अल्प के ता अर्थ तो बाहरियोनी। फुल ना वाइड ना कोन हो गला narrow. Vinod had a narrow escape. ठीक है जी all right. Select the option that can be used as one word substitute for the given phrase. A short interesting story about a real person or event. गोटे छोटो स्टोरी अबाउट अ पर्सन छोटो इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन इवेंट कौन होइतला से विषय गोटे छोटो स्टोरी। अच्छा गोटे होची एनेक्डोट मींस स्मॉल स्टोरी गोटे स्मॉल जो मोरालिस्टिक गोटे स्टोरी जो गोटे मोरल थिबो से भलिया। स्केच गोटे स्टोरी जो कि तम माने किछि ड्रामा करि परिबो कि ताकू ये करि परिबो। नैरेटिव जहां होइथला सेटा कहिबो माने ताकू डिस्क्राइब करिवो। पोएम तो स्टोरी नुह। तो देखो स्केच माने एक्ट करिवो तो हबनी। पोएम माने स्टोरी ऊपर कथा होनी। नैरेटिव माने जहां होइथला साहित्य तो सेटा केबे शॉर्ट हबनी। तो कोन हैला शॉर्ट स्टोरी होची एनेक्डोट। आंसर असला one word substitute करले कौन असला आंसर। A short interesting story about a real person is an anecdote. Okay anecdote. अच्छा इधर देखो select the most appropriate synonym. सेम स्ट्रक्चर है हमको ऑलरेडी गोटे एंटोनिम करैथिले किंतु सेम स्ट्रक्चर से सिनोनिम होय काहे कि कॉन्टेक्स्ट ऊपर एई कॉन्टेक्स्ट रे ए वर्ड रो मीनिंग जहां हबो सही भले हमको खोजबार अच्छी आंसर। अच्छा वी हैड बेटर वॉच आवर स्टेप एंड नॉट गिव हिम एनी एक्सक्यूज टू हैरास अस फर्दर। से कौन कहूँ आमे जहा करबा एथरे बेसी ध्यान से करबा जेमिति कि आगु को सी हमको हैरास करबनी। एठी हैरास रो अर्थ कोन एठी हैरास रो अर्थ नुह कि से तांको ये माने तांको किछि टॉर्चर करूची। एठी हैरास रो अर्थ कोन से तांको डरोची कि तांको ऊपर हुकुम करची कि से हमको धमकोची कि भाई तमे भूल करछ कि तांको ऊपर टिके जोर देखौची हैला। से आमे एथरो एमिति करबा कि आउ लोक से लोकटी हम ऊपर आउ जोर देखै पारिबनी। तो से बार बिट्रे अर्थ कोन धोखा देबा। तो एठी हैरास हिसाब तो धोखा देला वाला तो नहीं। सूद अर्थ कोन सूद होची माने ठीक है इजी फील करा भलो फील करेबा। एठी गोटे नेगेटिव अछि एटा पॉजिटिव अछि एटा होबनी। इंटिमिडेट माने डरेबा हैला। आउ रेलिश
ର अर्थ होची feeling a little bit good, intimidate माने डरेवा, ये तीनटा हबनी तो एठी से हमको आउ डरे जेंते आउ न डरे परिबो, एथर हम एमिति काम करो जेन से हमको आउ डरे परिबो। हरास सेठी यूज करछि तार अर्थ होछि एठी इंटिमिडेट, सो दिस शुड बी द आंसर। अच्छा एथर एगुडा बैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बैंकिंग रो क्वेश्चन पैटर्न देखो से प्राय एका भलिया क्वेश्चन पचार, एसएससी सेमति न गोटे माने एका भलिया क्वेश्चन गोटे पर पचारंतनी, बैंकिंग रे किंतु गोटे प्रकार क्वेश्चन गोटे सेक्शन करी पचार दियंती। देखिबो ये गोटे देखो या पर देखो ये एथरे कोन कहछि, एथरे से गोटे प्रकार क्वेश्चन माने फिल इन द ब्लैंक्स हिसाब रे एठी देछि, एठी से देछि कि आ किछि एक्सचेंज करा हे परिबे कि नै से गोटे सेट करी देछि, तो हमें गोटे पर गोटे सॉल्व करिबा। से कहछि इन द क्वेश्चन बिलो अ पार्ट इज ओमिटेड माने ब्लैंक ता, व्हिच इज देन रिप्लेस्ड बाय अ ब्लैंक, चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन that will fit into the blank most appropriately, माने भलो कि से ब्लैंक रे फिट हबो, ता अर्थ न कि अन्य वडा फिट हबे, फिट हबे कॉन्टेक्स्ट ठीक रहयो, कॉन्टेक्स्ट अर्थ मान होची पूरा सेंटेंस ता बोले गोटे मीनिंग बाहर थो, एटा प्रॉपर मीनिंग बाहर थो, लॉजिकल मीनिंग बाहर थो, तो सेही विषय से कहछि। अच्छा ही dash to the doctor's clinic last night, सीए काली राति रे डॉक्टर के क्लिनिक को जाइतला। आमे ग्रामर पढ़ी छे, ग्रामर रे से कोन कहै छी जेतो डेफिनेट टाइम ऑफ एक्शन दिया हो तो को टेंस लागिवो, पास्ट और को टेंस, सिंपल पास्ट, डेफिनेट टाइम ऑफ एक्शन होची सिंपल पास्ट, एडा सिंपल पास्ट की नो नो एडा नो सरला, he went to the doctor's clinic last night, सरला एडी ग्रामर भी यूज होउछे। अच्छा मधुसूदन हैंडल, अच्छा एटा मधुसूदन हेतबो मु एटा ये एटा मधुसूदन हैंडल्ड द टफ क्वेश्चन विथ ease and कोन, ease and कोन देखो ये जो हमें एंड कनेक्शन यूज करछे, कंजंक्शन से कौन तार काम कोन, इट कनेक्ट्स सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स, एका बलिया यदि पॉजिटिव अछि तो पॉजिटिव रहबो, बट हेतिले पॉजिटिव थिले नेगेटिव हेथो, नेगेटिव थिले पॉजिटिव हेथो ना, एंड अछि माने ता पूर्व जे हेतु ता पर भी सही बले टोन रहबो, तो एटी कहछि क्वेश्चन विथ ईज माने इजीली कला, आ कोन भल से कला से हेतु भल से कोटाबो, ग्रेविटी हबो की ना, कहीं ग्रेविटी अर्थ कौन होची टिके सीरियस है, कहीं ईज पर कहीं सीरियस हबो ना, डाउट डेफिनेटली नॉट, ईज अछि माने ताकू ऐसे भलो को डेफिनेट डाउट होबनी, ग्रेस हां हे परियो, ग्रेस माने भलो रे काम क्वाइट हे की रहला, ग्रेसफुल जोडा से, रिपीट रिपीट तो किछि में सेंस भी करूनी, सीज अर्थ माने रही जिबा, तो ये हबनी ये हबनी ये हबनी ये हबनी, आंसर कौन है ग्रेस, दैट शुड बी द आंसर। द स्ट्राइकर मिस्ड द गोल बट स्टिल अर्नड लाउड कौन डैश, गोटे स्ट्राइकर गोटे गेम रे फुटबॉल गेम होची सेडी स्ट्राइकर अछि, से किक कला गोल तो मिस कर गला, तथापि भी लोक माने ताकू कौन गोटे कले, से मिस करछि माने नेगेटिव गोटे कि जिंस करछि, तो ये कौन था जदि जनरल था ना, ही मिस द गोल एंड द माने तापर क्राउड कोन गल ताकू बहुत अपमान करछि, किंतु सेठी से कोन करछि बट अछि, बट माने कोन किंतु ता माने या पूर्व जहा थियो तापर ताठू उल्टा ही हो चेंज हो, द स्ट्राइकर मिस द गोल बट स्टिल अर्न कोन, अपलोड माने कोन ताली क्लैप्स, रिगार्ड्स तो हबनी, रिगार्ड्स कोन कहंती, आई गिव यू माय रिगार्ड्स सब बड़ा तो किछ हबनी, पनिश तो डेफिनेटली नॉट, पनिश ही था जदी बट न लगी था, टोन चेंज न होता ना, तो पनिश ना
ठीक है एडवाइस भाई से क्लिक कला ताको एडवाइस किए दबो क्राउड रे क्लास तो एडवाइस दबो नो सो द आंसर होची applause. The professor ended the lecture after a long class कौन प्रोफेसर कौन कले से लेक्चर तक एंड कले आफ्टर अ लॉन्ग क्लास डैश गोटे क्लास रे गोटे बहुत लंबा गोटे लंबा क्लास रे गोटे कौन हैला तापर से एंड कले लॉन्ग क्लास रे राइज जदि यूज करिबा किछि सेंस आसुची ते काट दबा लॉन्ग क्लास रिकॉर्ड गोटे से कौन करू द प्रोफेसर एंडेड द लेक्चर आफ्टर अ लॉन्ग क्लास रिकॉर्ड अर्थ कौन क्लास रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड किसी करथुले ना एठी लागु कि प्रोफेसर एंडेड द क्लास एज इफ ही मस्ट बी टायर्ड टिके टायर्ड होला पर हिथियो तो रिकॉर्ड का डेफिनेटली नो आफ्टर लॉन्ग क्लास डिस्कशन नहीं कि डिस्कशन हे थांदा तो हे थांदा नोरी डिस्कस होची आ एठी ब्रेक the break was long class break जदि अच्छी ताले पुणी माने एंड काई करिवे ताले ये होबनी डिबेट माने गोटे क्लास रे बहुत बड़ा बहुत लंबा डिबेट पर प्रोफेसर टी क्लास एंड करछंदी सेंस आछि सो इफ देयर इज तो इट सेइंग द प्रोफेसर एंडेड द लेक्चर आफ्टर लॉन्ग क्लास डिबेट एटा टिके देखाओ ने एटा होची अच्छा एटा होची he dash sold his Ferrari car after months of consideration सीए दा Ferrari car ताकू बिकी देला बहुत दिन भाबिबा परे आम कौन करू बहुत दिन भाविला परे जदि आम निजर गोटे गाड़ी था बिकी था कौन करता बहुत दिन भाविला परे आम केमती कहू कि बहुत दिन भाविला परे से फाइनली तार कारटा बिकी देला से जिन देखो ही डैश सोल्ड हिज फेरारी कार आफ्टर मंथ्स ऑफ कंसिडरेशन माने से लास्ट रे कौन हो बहुत मास जाए भाविला परे से फाइनली से कारटा बिकी देला तो प्रीवियसली तुम पूर्व ना एटा अच्छी फाइनली एटा अच्छी फाइनली तो एटा गोटे आंसर फाइनली आमे कारण आम जतले भी आमे व्हेन वी थॉट ऑफ दिस सेंटेंस आम मन भी फाइनली आस्थला सो दिस इज द राइट वे ही फाइनली सोल्ड हिज फेरारी कार आफ्टर मंथ्स ऑफ कंसिडरेशन तथापि देखिदा स्केर्सली बहुत कम वेरी रेयर हबनी एक्सट्रीमली नॉट मेक सेंस एंड एक्सट्रेनियस माने बहुत डिफिकल्ट रे बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज बहुत कंसीडर करची तो फाइनली लिखियो सो द आंसर शुड बी फाइनली लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट वन अच्छा इन द क्वेश्चन बिलो देखो सी गोटे सेट थिला ये आ गोटे सेट सी को कहूची इन द क्वेश्चन बिलो few words are given in bold जेमिति finishing dishes made chores kitten hello few words okay these words are may not be in their correct position acha eta hoba kotha nuho these words may not be in their correct position माने से जोठी भी लिखा है चंदी may not be they are in the right position the sentence is then followed by options with correct combination माने जदि ठीक जगह नथिबे से तांको जदि तांको ठीक जगह बसेबा जो ऑप्शन ता माने जो करेक्ट ऑप्शन थिबो सेटा हम चूज करे अछि correct combination of words that should replace each other in order to make the sentence grammatically and contextually correct. Find the correct combination of the word that should be interchanged. है ना को मैंने सी को जी एक जगह रे ई हबो कि मैंने जदि सेंटेंस ता पढ़जे after finishing her dishes the maid put the chores neatly in the kitchen. ହେଲା एटी किछि जदि कहू जदि किछि चेंज हो देखो से आफ्टर फिनिशिंग हर डिशेस द मेड पुट द चोर्स नीटली इन किचन अच्छा सॉरी बा परे आफ्टर फिनिशिंग ठीक कि लागु जी हर डिशेस ताको खाइबा सरला परे द मेड से जो मेड जे थला पुट द चोर्स त काम गुडा को सी किचन रे रखितला
सेंस होनी एठी चोर्सटा भूल जगह अछि चोर्सटा को जगह रहबो आमे कोन नाम काम सारीला परे काम आ जहा करे कथा तो कोन हो चोर्सटा जदि एठी आसला डिशेसटा जदि एठी गला से कहू आफ्टर फिनिशिंग हर चोर्स द मेड पुट द डिशेस नीटली इन द किचन सेंस आछि तो एटा को कोची से कोची बी टा डी संगे एक्सचेंज हबो कोडी लिखा है बी टा डी संगे एक्सचेंज हबो है बी टा डी संगे एक्सचेंज द अप्रोच फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज कि तमे आगो पढ़िबो कॉन्टेक्स्ट बुझी सरला पर निजे रिप्लेस करो ता पर ऑप्शन वाला देखो दिस वे यू विल बी मच मोर श्योर बिफोर स्टार्टिंग हिज राइटर द नोट्स बुक लेक्चर revised his research carefully एटा पढ़ु को हम जान बजे दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग यार के कारण कुछ कोनी सेंस आसुनी तो कहो बिफोर स्टार्टिंग हिज राइटर अच्छा बिफोर स्टार्टिंग एठी तो किछि भूल लागुनी तो ए जो थोर ऑप्शन अछि सेटा के हम काटि दवा ठीक अछि हे गेला हिज राइटर तार लेखक डजंट मेक सेंस द नोट्स मे बी राइट अच्छी बुक लेक्चर लेक्चर को बुक कला नॉट डजंट मेक सेंस रिवाइज हिज रिसर्च को रिवाइज कला जब भी हमें एठी कहबा बिफोर स्टार्टिंग हिज लेक्चर मैं तास लेक्चर स्टार्ट करिया पूर्वरु मेक सेंस तो ए जगह रे एटा रिप्लेस हबो ता माने एठी हबो लेक्चर आ एठी हबो राइट ता माने बी आउ डी चेंज हेबे को जगह बी आउ डी अछि एठी नाही एठी अछि आ एठी नाही तो हम जानि गेल आंसर को होला बिफोर स्टार्टिंग हिज लेक्चर the research book B हाँ E देखो तो research before starting his research अच्छा मैं तो लग रहा हाँ before starting his research the lecturer before starting his research before starting his lecture jodi hala the research books note revised his notes acha revise his notes habo revise his notes make sense the research the mane eta change ho jaye research ta aise hai before starting his lecture the research book writer acha ha the research book writer revised his note the research book writer revised his note एटा कंफ्यूजन हैला किंतु हमें ऑलरेडी पाई जायथिले कारण देयर इज ओनली वन प्लेस जोटा कि सेटा रिप्लेस होबा वेरी गुड अच्छा नेक्स्ट कोन लिखछि सी लिखछि he realized he lost his book at school when the teacher asked him to read से realize कला he lost his book at school when the teacher asked him to read जेतोले तांको टीचर तांको कहले पढिया पई से सेतोले तांको बहिटा हजे देछने आ कि चेंज ही रियलाइज ठीक लागुची ही लॉस्ट हिज बुक ठीक लागुची ही लॉस्ट हिज टीचर तो हबन ही लॉस्ट हिज रीड तो हबन ही लॉस्ट हिज स्कूल तो हबन ही लॉस्ट हिज रियलाइज तो हबन ठीक है एट स्कूल कारण जगह আছে एट रीड एट रियलाइज तो हबन तो एटा जाय भी ठीक अछि त माने एटा ठीक अछि जोटा ए अछि ताको एलिमिनेट कर दियो तो गोटे रहला नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड ठीक है जी गोटे पार्ट देखिए भी हमें आराम से आंसर डिड्यूस कर परिबा अच्छा अच्छा he arrived
he arrived morning at the heavy because of airport traffic and missed his important late flight. अच्छा, he arrived माने आमे खाली जानी बचे से तरह फ्लाइट टा मिस करची तो he arrived late हवा कथा देखिए he arrived morning तक बेहबनी he arrived late है 8 so this should be here अब 8 जदि हम एठी रखुचे his important morning flight makes sense तो हमरो 8 कहा को ई संग रिप्लेस होची तो बाकी सब गुडा को काट देबा not this definitely replace होछ तो 8 हबनी either 8 हबो जदि न हबो 8 तो हमर कोची B and C हम तो चेक कर देबा कोची at the heavy because at the airport होबो कथे because of heavy traffic ठीक अछि तो एटा ठीक अछि तो आंसर इज दिस एटा नुह कारण हमर आउ गोटे एक्सचेंज हबार अछि सो द आंसर इज ए ई एंड बी सी ठीक अछि बुझलो ये गोटे पैटर्न या पूर्व पैटर्न थला कोन सिनोनिम एंटोनिम पै सन अलग गोटे सेक्शन रखछनी एभला क्वेश्चन पै सन अलग गोटे सेक्शन रखुछन्ते नाउ लुक एट दिस ये गोटे in the question below the part is omitted which is then replaced by a blank means fill in the blanks choose the words from the given option that will fit into the blank most appropriately अच्छा already हमें याकू गोटे इहला क्वेश्चन करूचे मु तुमको 5 मिनिट दउची तमे केतरा अछि 1 2 3 4 5 टा अच्छा एटा जदि न बुझ पाछो मोटा टिके देखा जे जाऊ मोटा टिके छोटो को दउची देखा हबो तो 1 2 3 4 5 मु तुमको 5 मिनट तो लगी मु तुमको 2-3 मिनट दूची 2-3 मिनट तुम ट्राई करो तुम एटा को 2 मिनट पर देखि ट्राई करो तापर मु तुमको आंसर गुडा दूची okay ready अच्छा let's see अच्छा he checked the settings again to prevent another system कोन system dash हाँ सिस्टम टा नॉर्मली सिस्टम संगे एभला सिचुएशन लागे से आउथरे चेक कला सेटिंग गुडा को ताकि सिस्टम टा क्रैश न करू सेटा हम जनरली कहू सिस्टम फेलियर किंतु एठी जदी फेलियर वर्ड अछि यूज करबा जदी नाही देन तमने कहले क्रैश वर्ड अछि सो वी शुड यूज द वर्ड क्रैश he checked the settings again to prevent another system crash अच्छा despite the warning signs the company continued its risky financial माने बहुत रिस्क थिले भी माने लोक माने तांग वार्निंग देले भी तथापि से तांको जो रिस्की काम गुडा कंटिन्यू कले रिस्की काम गुडा कंटिन्यू कले हैला बोरो मीन वर्क ना expand तो doesn't mean work return doesn't mean work balance doesn't mean work venture means work हैला तांग काम गुडा work despite warning signs the company continued its risky financial ventures the committee delayed the vote to allow time for further कोन माने कमिटी रे कोन वोटिंग का डिले कला काहे कि टू अलाउ टाइम
फर्दर आगु को कौन आउ थोड़े माने आगु को टिके कौन आउ थोड़े भले कि देखा जाऊ कि ताको भले कि स्क्रूटिनाइज करा जाऊ से किसी थी तो assertion is not equal to scrutinize ki look into the matter. Revision, yes, this can be. Mention, no. Collection, outer further collection time हो. And division, आगु आप divide करिए पैसे ये करना थियो. So the only one that makes sense in this context is division. तो ये कोई बात नहीं कि मैं collection भी नहीं करें. In this context, voting the committee delayed the voting to a vote to allow time for further revision makes more contextual sense than allow time for further collection. What collection we do not know, but if you say revision man जो तो voting है था ना तो आउटर revise करें पे ही था that makes sense, more contextual sense. The researchers' findings directly challenges the existing scientific work. जहां एबे जो scientific work थिला ताकू से challenge कला. So forums does not mean work, context does not mean work, dispute does not mean work, feature doesn't mean work, framework रे work अच्छी already the word, so that should be the word. When you try and solve it by yourself, it is quite possible that you will always be right. The software update resolved the bug without affecting system. कौन सिस्टम टाको बेसी एफेक्ट न कर सिस्टम टाको खराब न करी कि सिसे गला माने जरे बग फिक्स कला without making anything without changing the system कि without breaking the system सोला किसी बात का protocol doesn't mean without breaking or changing. Operational system operational doesn't make sense over here. System access doesn't make sense. System liable system liable means जे जो तुम्हें दोषी no that doesn't mean. Integrity system integrity अर्थ in software system integrity अर्थ system टा जेमती तैयारी ही थला the way the system has been built, so the answer should be integrity. Now in the following question a sentence is provided with 3 highlighted words that may be incorrectly positioned. So जोटा हमें करथिले, so that was हमें 5टा वर्ड से डील करथिले एठी हमें 3टा वर्ड से डील करा. So there are 3 sentences. I would like you to take 2 minutes and try and solve it. तापर मु तुम माने को बतौछ. Ready? Only 3 questions. Ready? Chalo. Let's see. Himachal Pradesh improve mobile use in government schools to ban focus on well-being. लास्ट पढ़ले जना पड़ एटा भूल अछि नोबडी बैन्स टू ये तो एटा हम को जानि बचे से मोबाइल फोन रे यूज को बैन करले ताकि लोकंगर भलो हो. तो हिमाचल प्रदेश रो के गवर्नमेंट करथो तो गवर्नमेंट शुड बी हियर. हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट
हिमाचल प्रदेश बैंड schools to focus to improve. अच्छा हाँ, to improve एठी have a band. हाँ, एठी have a band हिमाचल प्रदेश बैंड मोबाइल यूज इन गवर्नमेंट स्कूल्स टू. हाँ, तो এটা कौन है? तो इट शुड बी CBA, correct? CBA, right? Karnataka launched the Deepika scholarship, higher 30,000 yearly to 37,000 schoolgirls in giving education. This seems to be okay. Okay, Karnataka launched the Deepika scholarship giving 30,000 yearly to 37,000 schoolgirls in higher education. माने C जगह रे B माने B जगह C जगह रे B होगा तो ACB. Here is the answer, right? अच्छा, Gurgaon's ward 22 is composting a zero waste model with becoming segregation and community effort. अच्छा, so Gurgaon's ward 22 is becoming a zero waste model with community segregation and composting efforts. Composting segregation and community efforts. कंपोस्ट करे सेग्रीगेशन टाकू माने जो हम जो मु सफाई वाला आसे ताको लाइक माने ग्रीन और ब्लू जेंदी क्वेश्चन दी सेटा, राइट? सो कोन आसीबो ए जगह रे बी, एटा BAC. Here is the answer, right? So these are the answer. Now eta gote new type of question. See Guji, the word has been given. A word has been given in the question and used in the sentence below. Identify the statements where the word has been used in a contextually and grammatically correct manner. कोई जगह रे ए word टा contextually और grammatically ठीक use होई छे. अच्छा, कोई word टा से कुछ curse ए जो word टा ए तीन टा sentence रे कोई जगह रे ठीक use होई छे. अच्छा, the heavy rain turned out to be a curse for the farmers who were hoping for a dry harvest. ସେମାନେ dry harvest ପାଇଁ hope କରୁଥିଲେ ହେଲେ heavy rain ହେଇଗଲା, ତା ମାନେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା. Make sense? After stepping on a nail, he let out a loud curse that echoed down the street. Loud curse. से गोटे कंटा ऊपर गोड़ रखिदेला ता मुहरु कटु वाक्य बाहर गला. सो लाउड कर्स दैट इकोड डाउन द स्ट्रीट. मेक सेंस? त माने एठी ठीक अछि तो ए रे ठीक अछि, बी रे ठीक अछि. अच्छा, त माने एठी एटा हबनी एटा कि एटा हबो. शी गेव हिम अ कर्स ऑफ एप्रिसिएशन. Curse of appreciation के भावने. Curse is negative, appreciation positive. So this is not the answer. Here is the answer, both A and B. So Aji, what we did, we looked into different kinds of questions regarding vocabulary that we have in SSC and banking. फर्स्ट जो तक मु करथि सेटा बैंकिंग एसएससी रो क्वेश्चन पैटर्न, तापर बैंकिंग रो क्वेश्चन पैटर्न. तो तुम देखो एसएससी रे से माने सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन को एका संगे रखंतनी कि बैंकिंग रे गोट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन को से गोटे पूरा सेक्शन करके दउछन. सो तुम जेतले अप्रोच करबो
एसएससी को से मन रे माने पैटर्न भाबी की जाइथो कि हां ये भले आसे गोटे ए भले बेस पर गोटे सिनोनिम आसे गोटे एंटोनिम आसे गोटे वर्ड प्लेसमेंट आसे से भले रैंडम हे जे पारे बैंकिंग रे सेक्शन वाइज आसे सो अकॉर्डिंगली तुम निजे को प्रिपेयर कर जाइथो तो एसएससी रे लेवल ऑफ क्वेश्चन माने लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज लेसर देन बैंकिंग लागु छी की दीटा सेम सेम किसी नहीं दीटा का सेम प्रकार वर्ड सेम प्रकार vocabulary they are both are using so आज ही एते की थाओ so in the next section then we'll start with another section आउ अन्य प्रकार PYQ हमें भी देखिबा okay so आज ही these are the answers for the PYQ vocabulary based thank you